So welcome back to my channel. Today's I will solve question answer of this lesson. This lesson name is No Room for a Leopard. ये क्लास 6 का बुक है इंग्लिश का. सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे बुक का क्वेश्चन. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट में आपका जो है टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस. ऑप्शन दिए गए हैं उसको आपको टिक करना है. ओके, द रेविन वॉज डीप, सो इसमें हो जाएगा आपका इट रिमेंड इज शैडो for most of the day. Second, a narrow path twisted its way down tells us that the cottage was on top of the hill. Third में the langur watched the narrator with curiosity because he passed that way regularly. फिर फोर में है the narrator clapped his hands when he saw the leopard because he wanted to give carriage to himself. फिर फाइव में द नरेटर फील्ड दैट द लियोपर्ड शोड ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप बाय नॉट हार्मिंग हिम वेन ही वेंट टू इट्स लेयर. फिर आपका है क्वेश्चन आंसर है जो कि हम लोग नोटबुक में कंप्लीट करेंगे. ओके, उसके बाद ये जो है ई क्वेश्चन. सर्टेन वर्ड्स आर ऑफन used together. Circle the words that can be used with the word is blue. ये जो ब्लू कलर से जो वर्ड दिया गया उसको इसमें आपको सेट करना है. ठीक है, तो स्मूथ का क्या हो जाएगा पेबल्स. यंग का आपका इसमें ये आपको टच करना है. स्मूथ का पेबल्स, यंग का शूट्स, हेडर डेंजर, स्टीप हिलसाइड, ग्रीन वैली. ओके, इसको आपको अटैच करके एक वर्ड बनाना है. ओके, जो ब्लू कलर से जो वर्ड दिया गया इसको अटैच करना है इस वर्ड में. इसमें कोई भी वर्ड सेलेक्ट करके इसमें अटैच करना है, एक वर्ड बनाना है. ओके, उसके बाद एफ में है रीड द सफिक्सेस एंड देयर मीनिंग. सर्कल द वर्ड इन ईच रॉ टू विच दीज सफिक्सेस कैन बी एडेड टू फॉर्म न्यू वर्ड्स. राइट द न्यू वर्ड्स. ओके, इसमें आपको सफिक्स करके एक न्यू वर्ड्स बनाना है, जैसे लाइफलेस, थॉटलेस. फिर इसमें डिपेंडेंस, डिफरेंस. उसके बाद चेयरेस्ट, वार्मेस्ट, प्रेजेंटेबल, कंफर्टेबल. उसके बाद चाइल्डिश, ग्रीनिश, वीकेंड, ब्लैकेंड. ओके, उसके देखिए यहाँ पे है आपका एज. सर्कल द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट ईच ऑफ दिस स्टेटमेंट. आपको जो करेक्ट है उसको आपको सर्कल लगाना है. ठीक है, द लंगूर्स वेयर चैटरिंग एक्साइटेडली. ओके, द लियोपर्ड हैड प्रोबेबली कम क्लोजर टू मोसरी बिकॉज द डियर हैड मूव्ड इनटू द वैली. फिर है 3. The narrator saw the partly eaten remains of a barking deer. Before में the leopard's body hung lifelessly from the pole. Okay? उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग नोटबुक में करते हैं. ओके, राइट द आंसर. फर्स्ट में द लंगूर वे आर ट्राइंग टू warn me of some hidden danger. How did the langurs behave? What was the hidden danger? आंसर आपका हो जाएगा The langurs were behaving in a very excited manner, making loud chatting sound in the trees. These behaviors was not of a usual kind. The hidden danger was the leopard, who had sensed the narrator's presence in the forest. उसके बाद आपका सेकेंड में what made the narrator feel that the leopard was following him around. What is it true that leopard was following him? आंसर आपका हो जाएगा the excited cause of the animals in the forest and the remains of the animals. that
that the leopard had hunted in the forest made the narrators aware of the leopard presence. No, the leopard was not following him, although the narrator was aware of the danger while he walked through the forest. 3 में आपका है what habits of behavior of leopard do you get the know about from the story. आंसर आपका हो जाएगा the leopard hunted the other animals for its food but it does not choose to kill the narrator when is confronted. Although the narrator was unarmed and could easily be defeated, this shows that he leopard did not fear humans and did not hurt them without a reason. फिर आपका think and discuss with your partner, share your answer in class. फर्स्ट में how do you know the narrator is a nature lover. आंसर आपका हो जाएगा it is very evident from the description of the forest given in the story that the narrator is a great nature lover and focuses on every detail of the forest in untamed and wild forms and the various diversities of the flora and fauna. He never had the intention of the hurting any animals and was sad to see that the innocent leopard was shot dead by the hunter without any reason. फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन है why did the narrator not object to the hunters hunting in the forest. तो आंसर आपका क्या होगा the narrator was sure that nothing could demotivate the hunters from hunting the animals in the forest. He considered them unpredictable and wanted to avoid them as much as possible. He stayed away from the hunters who shoot the animals heedlessly and aimlessly in the forest, and he realized that if he interferes them would fall into the danger. उसके बाद 3 में there were few birds to be seen and even the langurs had moved on. Why did this had happened. तो आंसर आपका हो जाएगा there were fewer birds to be seen and even the langurs had moved, and because he shoot bullets continuously without knowing who they were aiming at, the animals must have realized the danger that they were in, and so they moved away from the hunted forest. उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन डी डिस्कस इन क्लास. व्हाट डू यू थिंक द नरेटर मींट व्हेन ही सेड दैट द बर्ड एंड एनिमल्स न्यू देयर ट्रस्ट हैड बीन वायलेटेड. तो आंसर आपका the forest was the home of the animals. Hence, when the hunters shoot the other animals, it destroyed the peace of their home and the trust that the birds and animals had put in the humans to respect the sanctity of their homes was betrayed. ओके उसके बाद आपका है 2 क्वेश्चन बट डिड द लियोपर्ड ट्रस्टिंग वन मैन मेक द मिस्टेक्स ऑफ ट्रस्टिंग अदर्स. व्हाट डज द नरेटर मीन बाय दिस. व्हाट मिस्टेक कुड द लियोपर्ड हैव मेड. आंसर आपका हो जाएगा द नरेटर लव्ड नेचर एंड नेवर हैड द इंटेंशन ऑफ द हार्मिंग ऑफ द लियोपर्ड और encouraging it. So he felt safe and thought that the leopard trusted him. When it was shot down by the hunters, he wondered if at all leopard could trust any other human because it had not harmed the humans anyhow and was shot down without a reason. The mistake was not being
cautious of the hunters which resulted in its death. फिर 3 में आपका है there was room in the world for a mountain lion and me. Why did these words echo in the narrator's mind? Answer: the activities of the hunters led to the animals fleeing away from the forest, sensing danger. This made the narrator think about the space that the humans and animals could have shared peacefully along with the natural features. Hence, the word echoed in the narrator's mind. Okay, student, I have done all question in this lesson. If you like my videos, please like, share, and subscribe. Okay, student, Allah Hafiz. Bye.